हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एंजल केमिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 क्लास 8 फोर्स एंड प्रेशर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट 2 examples each of the situation in which you push or pull to change the state of motion। हमको पुश और पुल करते हुए 2 एग्जाम्पल ऐसे बताने जिससे स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। सो पुश की एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स एट रेस्ट इज पुल्ड टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम। हैवी बॉक्स की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है एंड विच कैन बी कैरिड फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम बाय पुशिंग। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a player pushes a football using his foot. Throwing a ball also can be the example of this, in which we are pushing a ball is the example of push which can change the state of motion of a ball. Now another examples, 2 examples of pull forces are as follows. सो यहाँ पुल करते हुए स्टेट ऑफ मोशन को चेंजेस दिखाने हैं। सो पुलिंग एनीथिंग एग्जाम्पल यू कैन टेक, rope is pulled to draw water from well. Another example, a drawer is pulled to open it. In both the examples we are changing the state of motion by pull. Next question, give 2 examples of the situation in which applied force causes a change in the shape of an object. अब फोर्स अप्लाइड करते हुए शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होते हुए बताना है। सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। इफ यू क्रश अ पेपर बाय स्क्वीजिंग, यू स्क्वीज अ बॉटल, है ना। आपकी मम्मी डफ जब आटा लगाती हैं, सो द शेप ऑफ द डफ इज चेंज्ड। Another example, if you take molding of clay को मोल्ड कर सकते हैं। So here you take the answers. The answer is here, squeezing a plastic bottle, deformation of clay by pressing it. Now fill in the blanks. To draw water from well, we have to pull at the rope. A charged body dash an uncharged body. Charged body uncharged body को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। So answer will be attracts. To move a loaded trolley. Loaded trolley को move करने के लिए what we can do? Push or pull? पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। सो आंसर विल बी पुश और पुल। इन द थर्ड फिल इन द ब्लैंक वी हैव 2 आंसर्स, पुश एंड पुल। नेक्स्ट, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। सो सेम पोल है तो यह क्या होगा? रिपल्शन। सो नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट repel north pole of another magnet. So here you can see the answers also. Next one, the archer stretches her bow while taking aim at the target. She releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, filled up the gaps in the following statements using the following terms: muscular, contact, non-contact, gravity, friction, shape and attraction. First, fill in the blanks. To stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its shape. क्या होगा फर्स्ट आंसर? शेप में चेंजेस आता है, क्योंकि जैसे ही आर्चर बो को स्ट्रेच बो पे फोर्स अप्लाई करेगा, द शेप ऑफ the bow will be changed. Next is
The force applied by the archer to stretch the bow is an example of dash force. So यहाँ दो ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शंस हम लोग चेक करेंगे कि कहीं दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं क्रॉस तो नहीं हो रहे हैं. So here we can say is an example of muscular force as well as contact force. So here we take muscular force. Okay. Next is the type of force responsible for change the state of motion of the arrow is an example of contact force. क्योंकि यहाँ तो मस्कुलर नहीं आ सकता है ना. एंड चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन करने के लिए जो एक्टिविटी हो रही है इसमें कौन सा फोर्स यूज में आ रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स. While the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to कौन से, जब एरो मूव कर रहा है एयर में टूवर्ड्स द टारगेट, तो उसमें कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? यू कैन सी द फोर्सेस विल बी ड्यू टू द ग्रेविटी एंड द फ्रिक्शन ऑफ एयर. सो द आंसर्स विल बी ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन. Next is the following situations identifying the agent exerting the force and object on which the force is acted. State the effect of the force in each case. हमको बताना है कि फोर्स लगाने वाला एजेंट कौन सा है और फोर्स कौन से ऑब्जेक्ट पे लग रहा है. फर्स्ट वन, squeezing a piece of lemon between fingers to extract its juice. So here you can see the example is given to you and we'll see the answer. In squeezing a piece of lemon, we make use of muscular force to extract its juice. Okay, the muscular force acts on lemon. So object is lemon and the agent exerting the force is muscle, and the result will be change in the shape of lemon. Next one, taking out paste from a toothpaste tube. Toothpaste tube से अगर पेस्ट बाहर निकालेंगे, so let's see the agent. The agent will be muscular force. The object will be toothpaste, and what will happen? The result will be changing in the shape of the toothpaste tube. Okay. Next is a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to the wall. एक स्प्रिंग जो कि उसका एक एंड, अपर एंड जो है वो तो वॉल में फिक्स किया गया है और लोअर एंड पे लोड फिक्स किया गया है. सो द एजेंट विल बी ग्रेविटी. ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल वर्क हियर and the object on which it works is the load. And what will happen to the spring? The shape of the spring will be changed. Okay. Next, an athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. So which force will act on it? Because the athlete will use his muscles, so the force will be muscular force. Where he will apply its force? On the ground. And what will happen to the situation? There will be change in the motion. Okay. Next one, a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? So first of all, when a blacksmith hammers a hot piece of iron, he is using his muscular force. And what will happen to the piece of iron? Its shape will be changed. So change in the shape will be the answer. Next is
An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. एक बलून को सिंथेटिक क्लॉथ से रब करने के बाद वॉल के अगेंस्ट प्रेस किया गया है. It is found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? So if you rub any object, it will get certain charges. Okay, so it is a type of non-contact force, and then name of the force will be electrostatic force, which will be responsible for the attraction between the balloon and the wall, because a charged body attracts an uncharged body. The balloon is charged and the wall is uncharged. Clear? So here you can see the answer is also given. I have already explained it. Next question. Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. एक बकेट को, पानी से भरे हुए बकेट को उठाना है और उस पर डिस्कस करना है कि कौन कौन से फोर्सेस उस पर काम कर रहे हैं. डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स मोशन. सो लेट अस थिंक अबाउट द सिचुएशन. Which two forces will work here? So you are lifting a bucket, so definitely you are using your muscular force. So muscular force is working against which force? Gravitational force, which will try to pull the bucket towards it or towards the earth. So these two forces are opposite in direction and the magnitude of the forces are equal, so there will not be any change in the state of motion. Clear? Next question. A rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. एक रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं तो इमीडिएटली उस पर कौन से टू फोर्सेस काम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, because the rocket is moving upward, so definitely the immediately force which will work on it is gravity or gravitational force, and the another force is what? The friction of air. So these are the two forces will work on it. So the two forces are the force of gravity, which pulls the rocket towards the ground, and the force of friction due to Earth's atmosphere, which opposes its motion. Next question is, when we press a bulb of a dropper with its nozzle kept in water, the dropper is seen to escape. The air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. So why? It is due to atmospheric pressure. Let's understand this. How does it works? Okay. So what happens when you are pressing the bulb of the nozzle? So nozzle के अंदर के सारा का सारा जो एयर है वो एस्केप कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बबल. एयर चला गया तो उसके अंदर प्रेशर भी रिड्यूस होगा. सो व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर अबव द वाटर? प्रेशर अबव द वाटर विल अप्लाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है. ओके, so this pressure will apply a force on water and the water will be filled in the dropper. Clear? This is the situation. Answer is given here. Like the video, share it, comment on it. Do not forget to subscribe the channel. Thank you and have a good day.